on. Okay. Gas particles are moving with the different speeds, so we can find out their average speed and root mean square speed and so on. So let's see various speed of the gas particles. Can you see it? Let V1, V2, V3 and so on are the speed of the gas particles. Then average speed will be all the speed added together divided by number of particles. सब पार्टिकल की स्पीड ऐड कर दीजिए और टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल से डिवाइड कर दीजिए. दिस इज द सिंपल वे ऑफ calculating the average speed of the gas particles, but very difficult because we know very large number of gas particles are there, so difficult to count or difficult to measure these speeds, individual speeds. So there is another formula which is temperature based. If you know the temperature, you can very easily, and if you know the temperature and you know the molar mass, you can find out the average speed with the other formula. This is given. Maxwell has studied these all speeds and given the formula, which is average speed is under root of 8 RT divided by pi m naught square. R क्या है? Universal gas constant 8.3 something. T will be the temperature in Kelvin, and m naught is the molar mass. Okay. Heavier the gas, more the molar mass, less will be the speed of the average speed of the gas particles. Clear? Nothing much to explain here. ठीक है यहाँ तक? Yes. Okay. Let's see the next one. Mean square speed. Square speed में क्या करना है? स्क्वायर करके मीन लेना है उनका. स्पीड का स्क्वायर कर दीजिए and then take the mean, and other formula will be in terms of T and molar mass, 3 RT upon m naught. Square and square करके मीन लेंगे, therefore it is called mean square velocity or mean square speed. और अगर इसका रूट ले लेंगे तो it will be called root mean square velocity. तो रूट ले लेते हैं. Next one is the root mean square velocity. तो root mean square velocity is the root of previous one. यहाँ पे रूट लेंगे, इसका भी और इसका भी, इसका भी. तो first formula will be like this. VRMS will be under root of this. रूट करना, देखो रूट लेना है, मीन करना है डिवाइड बाई n और स्क्वायर भी करना है. तो रूट डिवाइडिंग बाई n मीन्स मीन, adding and squaring and adding is the square. तो mean is mean square speed और mean square velocity. तो दोनों तरफ रूट ले लिया, नीचे भी रूट ले लेंगे इसका. तो it will be का this is the mean square velocity. इसका रूट लेंगे तो root mean square velocity बन जाएगा. तो this is the formula. If V1, V2, V3 are given, suppose they are giving you 5 velocities, है ना? 5 velocity दे दी, 5 number of particles दे दिए, तो mean speed will be like this. और root mean square velocity, root mean square speed can be found out like this, squaring and adding and dividing by number of particles and taking the root. But again, this is, I know, you know, this very difficult to get the individual speed of the gas particle. Therefore, in terms of the time and molar mass, it will be this formula. Under root of 3 RT upon m naught. 3 and R are the constant, so it is depending upon temperature and molar mass. More temperature means more will be the RMS speed, and more molar mass means less will be the RMS speed. Heavy particles same temperature पे थोड़ा slow चलेंगे, है ना? Gas molar mass अगर more होता है तो molecules भी heavy होते हैं, you know, and they will be having more inertia. They will be moving with the less speed, less average speed, less RMS speed, and so on. So this is the formula, only formula. This is the formula given in our textbook. RMS speed का दिया है,
Others are not given, but you have to remember all three. All three are similar. In fact, only constants are different. RT upon M naught is there in everyone. यहाँ पे देखो 8 by pi है, यहाँ पे 3 है. Other terms are same. All right. So can we convert this into the this is the molar mass? If can we convert it into the terms of individual mass of the gas particle? Yes, we can convert it into the particle of gas. I mean mass of the in term of the mass of the gas particles. Let's see this one. इसको हम ऐसे भी convert कर सकते हैं. Can you see here? Let me show you. We can convert it like this also. If m is the mass of the each gas molecule, then molar mass will be mass of the gas molecule multiplied by Avogadro's number. ये value हम यहाँ put कर देंगे. But R upon Na is nothing but a Kb Boltzmann constant, and नीचे m रह जाएगा. So you can see both the relation. If we replace R with Kb, Boltzmann constant is very low value, 10 to the power minus 23 के order का. So molar mass also to be replaced by the mass of the gas particle, which will be very small. Single gas particle will be very light. M क्या है? Mass of the gas particle. यहाँ पे देखो m is the mass of the gas molecule, which will be very small. Single particle will have very small mass as compared to molar mass. तो ये वैल्यू भी चेंज हो गई, ये वैल्यू भी कम हो गई, दोनों कम हो गई. तो सिंगल मॉलिक्यूल का अगर मास दिया है, देन आल्सो वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस रिलेशन. यू नो मोलर मास जो है जनरली वी राइट इन ग्राम, तो उसको 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. डोंट मिस दिस पॉइंट. आई हैव फाउंड दैट यू आर जस्ट मिसिंग दिस पॉइंट. मोलर मास को केजी में कन्वर्ट करके लिखना पड़ता है व्हेन वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स. आना समझ में? जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मोलर मास 32 ग्राम होगा, उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके. ठीक है, बिकॉज आर इज इन एसआई यूनिट, टेम्परेचर इज एसआई यूनिट, मास शुड आल्सो बी इन एसआई यूनिट, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू केजी. ठीक है, क्लियर? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. root mean square velocity 3 RT by m naught. Sir, so we don't have any derivation of this? No derivation. We can get it from the pressure relation. pressure अभी हम derive करेंगे तो उससे निकाल सकते हैं. We can derive this relation. We can get back this relation from the derivation of pressure. Okay, sir. But derivation is not there in our course. अगर आता भी है तो प्रेशर के डेरिवेशन से कर सकते हैं. I will tell you how. Third one is the most probable speed. Most probable speed. Next one, fourth one, is the speed possessed by maximum number of gas particles. Possessed by the maximum number of gas particles. It is not the maximum one. मतलब कुछ पार्टिकल की स्पीड जो है बहुत ज्यादा होती है, कुछ की मॉडरेट होती है, कुछ की कम होती है. तो दिस इज द जो स्पीड possessed by the maximum number of gas particles. जो मैक्सिमम परसेंटेज है ऑफ द गैस पार्टिकल, उनकी स्पीड क्या है? दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. दिस इनफैक्ट इज द लीस्ट वन. कुछ ग्राफ अगर हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन देखें, विच इज नॉट इन अवर बुक, आई थिंक अभी न्यू बुक में नहीं, ऐसा कुछ ग्राफ आता है. और यहाँ पर नंबर ऑफ गैस पार्टिकल का फंक्शन होता है, यहाँ पर स्पीड होती है. तो RMS स्पीड इज मैक्सिमम, देन एवरेज स्पीड समवेयर हियर, एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज फॉर द लीस्ट वन. ऐसा कुछ होती है, बिकॉज इसमें 2 है यहाँ पर देखो. तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज द least one, but it is possessed by the maximum number of gas particles. Maximum percentage, say 70% of gas particle is having the speed, say for example 400 meter per second. It will depend upon the type of the gas, and 20% is having the say
average speed 500 meter per second, and 10% is having the RMS speed, which is maximum 600 meter per second. तो वो कैलकुलेट मैथ्स के कैलकुलेशन से आएगा, इतना डिफरेंस नहीं होगा, दे विल बी मे बी क्लोज टू ईच अदर, बट मैक्सिमम इज आरएमएस स्पीड. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज अंडर रूट ऑफ 2 RT अपॉन m नॉट 2s में, और RMS में 3 था, एवरेज में क्या था, अंडर रूट ऑफ 8 बाई पाई, विच इज ग्रेटर देन 2 and less than 3. So average speed is in between. Most probable speed is the least one. RMS speed is the most one, maximum one. ठीक है, so all three speeds we have discussed, and there are all three, you can see, all are directly proportional to temperature in Kelvin and inversely proportional to molar mass. Or generally question comes in the ratio. Most of the time I have seen question being asked in the ratio. Let's see how the question is given in NCERT book. NCERT book only they have given the RMS speed के question दिए. You have to remember this formula. Under root of 3 RT upon m naught. उसमें भी ratio में 3 will go and R will go, है ना? So let's see what are the questions given in NCERT book. ये लास्ट दो आप देख सकते हैं यहाँ पर, एवरेज वाला हमने पहले डिस्कस कर लिया. ठीक है, देखिए क्वेश्चन एक तो ये दिया है, at what temperature is the root mean speed of an atom in an argon gas cylinder equal to the RMS speed of the helium gas at temperature -20 डिग्री सेल्सियस. तो इक्वल दिया है तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, फार्मूला लिख देंगे, अंडर रूट ऑफ 3 RT 1 upon m naught 1 under root of 3 RT 2 upon m naught 2. तो स्क्वायर कर देंगे, रूट विल गो, 3R will also get cancelled, T1 upon m naught T2 upon m naught 2. वन फर्स्ट सीक्वेंस में फर्स्ट में क्या दिया, आर्गन, तो इसका टेम्परेचर है, एंड व्हाट इज द मोलर मास 39.9 ग्राम. ग्राम विल गेट कैंसिल बोथ साइड. T2 -20 डिग्री सेल्सियस, 273 minus 20 is 253 divided by 4. So this is roughly 40, and इसको 10 times, close to 10 times, 25 30 के आसपास आना चाहिए, but since it is slightly less than 10 times, so T1 is coming 2520. 2520 answer is given, Kelvin. This is given Kelvin, roughly 10 times. Got it? Yes, sir. So this is question number 9 of our textbook. What about this question? At what temperature RMS velocity will be double to that at 0 degrees Celsius for any gas? It is for any gas, and it can be for average speed also. This question can be for most probable speed. सभी का आंसर सेम रहेगा, valid for any gas. तो डबल है, V2 is 2 times of V1 है ना, तो it will be 3 RT
2 upon m naught to 3r T1 upon m naught. स्क्वायर कर दो. I'm not getting cancelled, this getting cancelled. T1, how much is the initial temperature? T2, sorry, not Q लिख दिया हमने. T2 निकालना है. T1 कितना दिया है? T2 is 4 times of T1. T1 is 0 degrees Celsius, that will be 273. If you multiply Kelvin. ठीक है. और अगर सेल्सियस में लिखना है 273 कर दो. It will be 819 degrees Celsius. ठीक है. Got it? No problem. Are you there? Yes, sir. Okay. So you have to remember the correct formula for RMS speed, and which is important also. And अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मोलर मास को केजी में कन्वर्ट करके पुट करना है ना. If temperature is given, type of gas is given, they will ask you find out the RMS speed. So molar mass should be converted into kg. All right. Moving on to the next one. Let's see what is the next one. Next one is the kinetic theory of an ideal gas. तो कल हमने जो मॉडल देखा था, we can just relate with that. पहले assumptions है, उसका derivation is for the force, for the pressure in fact. Under what are the assumptions? These are the assumptions. So gas contains large number of molecules which are in incessant random motion. They will be moving left, right, up, down, and so on. Random motion continuously. More the temperature, more will be the faster will be moving. And interaction between the molecules is negligible. They don't interact. Potential energy is almost zero. For ideal gas, it is negligible. And they move in the straight line till they collide. And again, after collision, they will move in the straight line. Collision के बाद भी, they will turn and move in the straight line. And collision is elastic collision. No loss of energy. Their velocity changes due to collision with one another and with the walls of the container. And collisions are considered to be elastic. Therefore, total kinetic energy and momentum is conserved. Elastic collision में दोनों conserve होते हैं. All right. So these are the few assumptions you have to write and then derive the relation. Okay. You have to write the assumptions and derive the relation for pressure. So can we derive the relation for pressure? Let's see. How do we get the relation for pressure? Because of collision we already seen. उसने जब कल मॉडल को ऑन किया था, particles were moving, and ball bearings were moving up, down, and left, right, and in all the direction, hitting the piston and cylinders wall. Piston was rising because it was free to move because of pressure. It was rising. More faster the gas particle move, more pressure, more height it was going. So let's see derivation for pressure. Pressure of an ideal gas. So it is done for the cubical cylinder. It is valid for any shape cylinder. But for cubical cylinder, is easy to derive the relation. Therefore, we are choosing that one. So let's see.
कंसीडर ए गैस इनक्लोज इन द क्यूब ऑफ द साइड L. इसकी साइड L है, तो एरिया ऑफ द ईच सरफेस विल बी L स्क्वायर. हमने ये सरफेस को टारगेट किया है इसके ऊपर, वन साइड शेडेड साइड. ईच सरफेस विल हैव द एरिया L स्क्वायर. मॉलिक्यूल विद द वेलोसिटी कंपोनेंट्स, ये वाला मॉलिक्यूल देखो, it will have the velocity component Vx this side, Vy this side, Vz upward. So it will have velocity component Vx, Vy, Vz. Hit the wall parallel to YZ plane. YZ plane, Y इधर है और Z या Z axis इधर है, उसके parallel. This one, another side. That is perpendicular to X axis. ये प्लेन लिया हमने. कंसीडर द शेडेड प्लेन. इनफैक्ट कंसीडर द शेडेड प्लेन. ये इसका जो एक्स कंपोनेंट है इधर जाएगा और बाउंस बैक होगा. इट इज शोन हियर, बाउंसिंग बैक विद द स्पीड माइनस विद द वेलोसिटी माइनस Vx बिकॉज इट इज इलास्टिक कोलिजन. एरिया ऑलरेडी वी हैव मेंशन्ड L स्क्वायर. तो कोलिजन के बाद की स्पीड क्या होंगी बोलो? कंपोनेंट्स विल बी, which component? X component is changing. Collision is elastic. X component will reverse. Other components will remain unchanged because उनके साथ collision नहीं हो रहा. Collision is elastic. Therefore, velocity after collision, component of velocity will be minus Vx. Y component will not change, and Z component will not change. ये बस bounce back हो रहा है. ये गया है सर Vx से और बाउंस बैक हो गया माइनस Vx से. ये यहाँ पे दिखाया मैंने. पार्टिकल इज गोइंग लाइक दिस, तो ओनली X component is reversing because it is this surface is perpendicular to X axis. X component gets reversed, that becomes minus. ठीक है यहाँ तक? Now what in fact we are doing, our what is the purpose to do this? ये हम सब क्यों कर रहे हैं? Because we know the basic things. Basic क्या है? चेंज ऑफ मोमेंटम. चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है उसको जब टाइम से डिवाइड करते हैं फोर्स मिल जाता है, और फोर्स को जब एरिया से डिवाइड करते हैं तो प्रेशर मिल जाता है. तो पहले हम चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे सभी पार्टिकल्स का जनरलाइज वे से, एंड चेंज ऑफ टाइम मतलब टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे. विल गेट द रिलेशन फॉर फोर्स, देन विल डिवाइड इट बाय एरिया. एरिया इज वेरी सिंपल, by L square or simply A is there, divide कर देंगे तो प्रेशर मिल जाएगा. And we have to do it. We are doing it for single particle. We have to do it for all particles. सभी particles का करना है. But focus first. Let us get it for the single particle. ठीक है यहाँ तक? Single particle का हमने देखा. X component is changing, reversing. So change in the momentum of molecules. Change in momentum. Initial momentum, sorry, final momentum P2 minus P1. Momentum क्या होता है? Momentum क्या होता है? M into V, mass into velocity, X component, and it is going back negative direction में इसलिए minus. And first one was okay, यहाँ पे मैं लिख दूँ P2 minus P1 से करना है. And reverse component and incoming component is P1. It is in the positive direction. ये direction में plus ली है. Outward direction, I mean, we have taken this direction plus or this direction minus. ठीक है, clear? तो left वाली direction minus ली है तो इसलिए यहाँ पे minus है. Right direction is plus, so it is added up now. If any particle bounces back, momentum will be double always. Sin magnitude of momentum will be double. तो 2mvx हो गया. तो change of momentum of molecule ये है. तो this much momentum will be transferred to the wall in opposite direction. So momentum transfer to the wall will be plus of 2mvx. Momentum जो है वॉल को कितना ट्रांसफर हुआ? अगर पार्टिकल का इधर है तो वॉल को इधर अपोजिट 2mvx. इवन इफ इट वाज माइनस 2mvx, तो अगर ये प्लस आएगा तो ये माइनस हो जाएगा. बट इसके बाद में हम एनीवे वी विल टेक द मॉड्यूल से, यू विल से सर अगर अभी हमने ये सरफेस ली
तो ये तो प्लस आ जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा। बट इन एनी केस वी आर इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड, है ना। बाद में अगर वो वॉल का माइनस भी आ जाएगा तो नो प्रॉब्लम, उसको मॉड ले लेंगे, डजंट मैटर। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल इज 2mvx, ठीक है। इतना इतना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, और इट विल बी अगेन आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल कोलाइड, पार्टिकल विल गो दिस साइड, इस सरफेस पे आएगा, फिर वापस जाएगा। कितना टाइम लगेगा उसको? L डिवाइडेड बाई Vx आने में और L डिवाइडेड बाई Vx जाने में। तो एक काम करते हैं, डेल्टा टी ले लेते हैं, लेट अस सी, वी डोंट हैव टू फाइंड आउट द डेल्टा टी करके बाद में it may get cancelled. Let us see whether we have to write like this or we have to just find out the value of temperature, I mean change time का. Now more or less we are following the NCERT book method. तो ये मिल गया इतना, है ना। अभी आगे क्या देखते हैं, let us see what is the next one. देखो, now NV, if NV is the number of molecules per unit volume and the total number of molecules divided by volume, है ना। NV is the number of molecules per unit volume. Unit volume में 1 मीटर क्यूब में NV है पार्टिकल, ठीक है। Then number of particles hitting the surface in time delta t. Delta t टाइम में कितने हिट करेंगे इसको? तो डेल्टा टी टाइम में वॉल्यूम कितना कवर होगा? हाउ मच वॉल्यूम विल बी कवर्ड डेल्टा टी टाइम में? इफ यू फाइंड आउट द वॉल्यूम कवर्ड, तो और यूनिट वॉल्यूम में हमें पता ही है इतने पार्टिकल है एनवी, यूनिट वॉल्यूम में एनवी, तो डेल्टा टी टाइम में वॉल्यूम देखते हैं कितने, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? ओके, हाफ पहले नहीं लिखते, वॉल्यूम कवर्ड इन डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई एनवी, एनवी इज द नंबर ऑफ वॉल्यूम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम के लिए ये एनवी, तो ये वॉल्यूम टाइम टी में कितना वॉल्यूम आएगा बताइए? और हाफ भी आएगा, डिवाइड बाई 2, बिकॉज 50% particle will be moving this side also. All the particle will not be hitting this one. Since gas is isotropic, मतलब uniform है, gas is uniform. So assuming if 50% particles are going this side, 50% particle will be going opposite direction. इसलिए half करना पड़ेगा. Why we have done half? Because half of the molecules move in the opposite direction. इसलिए half करना है यहाँ पर. तो half तो as it is. वॉल्यूम कितना होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड विल बी Vx इनटू टी, डेल्टा टी, ये डिस्टेंस हो जाएगा। समझा कैसे निकाला वॉल्यूम? एरिया इनटू डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कौन सी एक्स कंपोनेंट है? टाइम डेल्टा टी में हम कैलकुलेट करें, एंड दिस इज द वॉल्यूम, एंड यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स है? एनवी। ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए which are going and hitting this surface, which are going and hitting this surface. तो ये सिंगल वॉल्यूम, सिंगल पार्टिकल का हमने चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला था, ऑल द पार्टिकल्स का इतना, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जितना हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड डेल्टा पी इज इक्वल टू वन मोमेंटम, वन पार्टिकल का मोमेंटम इतना ट्रांसफर हुआ था और टोटल पार्टिकल्स आर इतना, ये वाले half AVX into T delta T into NV। तो ये मिल गया हमें टोटल नंबर ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर्ड। व्हाट वी हैव डन, सिंगल पार्टिकल का निकाल लिया, फिर सभी फिर हमने NV लिखा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम कवर्ड इन डेल्टा T will be area of cross section of the area of the surface multiplied by distance covered Vx into delta T. Half particles, because gas is uniform, 50% particle will be moving in opposite direction because random motion है, ये नहीं होगा सारे पार्टिकल इधर ही आ रहे हैं सर, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं, तो 50% particles will be heading opposite, ठीक है। तो ये मिल गया आपको। फोर्स क्या होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी। इसको हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, डेल्टा टी कैंसिल हो गया,
ये कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, अदर टर्म्स विल बी रिमेनिंग, ओनली डेल्टा टी विल गो। और इसमें भी टू को भी कैंसिल कर दिया हमने, और क्या कैंसिल हो रहा है, डेल्टा टी पहले से कैंसिल हो गया, क्या बचा मास, और वी एक्स 2 बार है तो वी एक्स स्क्वायर हो गया, एरिया ऑफ द सरफेस है, और एन वी है। और प्रेशर के लिए किससे, एरिया से डिवाइड करेंगे, तो इस टर्म ए भी कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पर, इसको फोर्स को यहाँ लिखेंगे, ए से डिवाइड कर देंगे, ए भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचा, मास इंटू वी एक्स स्क्वायर इंटू एन वी। एन वी इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन वी क्या होगा, टोटल पार्टिकल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। लास्ट में लिखा है मैंने इसको, एन वी का फार्मूला लिखा है। नाउ अभी ये सिंगल पार्टिकल की बात की हमने, आई मीन पार्टिकल्स की जो पार्टिकल्स तो हो गए सारे, बट वेलोसिटी हमने सिंगल पार्टिकल के लिए, इसको भी एवरेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑल द पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। अभी देखो इसको जनरलाइज कैसे करें, दिस इज द प्रेशर ड्यू टू व्हाट इज कॉल्ड प्रेशर, दिस इज द प्रेशर हियर देखो जनरलाइज ऐसे लिखते हैं इसको, velocity, ओके एक मिनट, यस टाइम, आई थिंक टाइम इज ओवर, यहाँ पे मैं एंड कर देता हूँ उनको। नाउ वेलोसिटी विल बी जनरलाइज, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, यहाँ तक देख लो, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी लेंगे, बिकॉज वी हैव टेकन द vx इज द वेलोसिटी ऑफ द सिंगल पार्टिकल वी हैव, एंड नाउ वी हैव इंक्लूडेड ऑल द पार्टिकल्स, तो इसको भी एवरेज वेलोसिटी के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो दिस मच यू कैन सी, मंडे वी कैन कंप्लीट दिस रिमेनिंग पार्ट। Sir, Yeah. sir, this the n which we found the value n is equal to half volume into nv. I did not understand that. How do we get that? Okay. NV is the number of particles per unit volume. Just I will try once, otherwise Monday we will discuss. So NV is the number of particles per unit volume. Unit volume में, है ना? Per unit volume. So how many particles will be there in the volume covered in delta t time? Delta t time में कितना volume cover होगा? तो volume covered in delta t time, this area of cross section A, और डेल्टा टी टाइम में डिस्टेंस कितना होगा, ये x इंटू, आई थिंक डिस्टेंस x कितना होगा, v इंटू डेल्टा टी, Yes, sir. that much volume will be, all will be colliding here, so volume will be a into distance, distance is nothing but a velocity into time, velocity is vx, time is delta t, and 50% particles will be moving in opposite direction because they are in random motion. अगर इधर के जो हमने पार्टिकल, all will not be going this side, 50% will have the component in opposite direction also. अगर ये पार्टिकल ऐसे आ रहा है तो कुछ पार्टिकल ऐसे भी जा रहे होंगे, उसके कंपोनेंट इधर होंगे, एक्स कंपोनेंट इसका इधर है, तो 50% का पार्टिकल अपोजिट होगा, इसलिए 50% ऑफ दैट इस सेम वॉल्यूम में 50% विल हैव कंपोनेंट दिस साइड, 50% विल हैव कंपोनेंट दिस साइड, देयरफॉर हाफ से मल्टीप्लाई किया। Okay, sir. Yes. ठीक है, so we'll finish it on Monday and stopping here. Thank you. Thank you, sir.